आइजा सैनिटाइजेशन में हेल्प करेगा। वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ नितेश। आप लोगों ने मेरा पहला व्लॉग देख ही लिया होगा। वेल एक्चुअली अभी क्या सीन है कि गैंगटॉक में पूरा लॉकडाउन हो गया है, तो कहीं कुछ बाहर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आई डिसाइडेड कि हाँ अब आज कर तो क्या सकते हैं ब्लॉग में। सो आज आई गिव माई कार अ ड्राई वॉश। उसके बाद उसको अंदर से वैक्यूम भी करना है। लाइक एक्चुअली मैंने थोड़े दिन पहले ही गाड़ी सफ़ा की थी, बट ऑल ऑफ अ सडन इट स्टार्टेड रेनिंग, तो मुझे आधे में ही छोड़ना पड़ा था वैक्यूम का प्रोसेस। और फिर मुझे सैनिटाइज भी करना है, तो मैं अभी साथ साथ में उसको सैनिटाइज भी करूँगा गाड़ी को। तो आई शो यू कि क्या क्या करता हूँ। कल आज का ब्लॉग बेसिकली इसी के आजू बाजू घूमने का है, तो आई होप यू डोंट गेट बोर्ड विद दैट। बस मैं तो पहले जस्ट जब मैंने गाड़ी यहाँ ला कर रखी, सो मैं अभी गाड़ी पूरी वेट थी, लाइक इट वॉज कम्प्लीटली वेट। अभी भी देख लो, आपको थोड़े बहुत पानी की दाग देखेंगे। धूप आज कम से कम ना करते 4-5 दिन बाद इतनी अच्छी धूप लगी है, तो लाइक इट स्टॉप रेनिंग एंड इट्स अ क्लियर स्काई टुडे। वेल शाम तक आ जाएगी बारिश, उतना मुझे पूरा भरोसा है। बट मैंने सोचा था कि जो पानी है उसे मैं क्लोथ से सफ़ा कर दूंगा, बट वो अपने आप ही गर्मी की वजह से अपने आप ही सूख गया है ऑलमोस्ट। बट स्टिल एक बार तो मैं लाइक कपड़े से सफ़ा करूंगा। सो व्हेनेवर यू आर क्लीनिंग अ कार, मेक श्योर यू हैव अ माइक्रोफाइबर क्लॉथ। इससे डस्ट पार्टिकल्स जल्दी से गिर भी जाएंगे और ये पानी भी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। सो आई विल जस्ट गिव इट अ क्विक। Be thinking that this machine doesn't work as powerfully as the ones which we have on this car wash center, service centers and all, but हाँ ये उतना पावरफुल नहीं है, but still it's very handy enough. Like आपके पास है तो anytime you want to clean your car from the inside, any dust particles that you want to take out, very easy to do that. कोई झिक नहीं, कोई किचकिच नहीं, सीधा लगाओ, जोड़ो, काम करो। So as you can see, it's 90% clean now, so much more cleaner than what it was before. These particles, I don't know what they are, so next time when I go for washing, I'll ask them to clean this. This is on the driver's side, safety procedure number 1. So I'll be using this, as you can see. So I'll show you how to use it. It's very easy. First thing you do is you shake it very well. So once you shake it, it becomes really heavy. After that, you just have to spray it. So a white color foam comes out, right? This is a microfiber cloth, and you just swipe it around everything. Also make sure you have a car dustbin in your car. It's very necessary these days, and it's a good practice to have it. Now I'll clean the door. Make sure you don't spray it on your speakers, because once it gets there, it becomes really very difficult to get it out. So I'll just take a cloth and rub it through. You see it provides a sign also. तो गाड़ी में चमक के साथ साथ गाड़ी भी साफ हो रही है, सैनिटाइज भी हो गई। completely clean door.
So little bit of spray is enough. Take a cloth and this is something which we always forget, always. So this is the part that you clean out here. Little bit of spray and done. So guys, done with the sanitization process. गाड़ी सफ़ा हो गई है 90% ऑलमोस्ट बोले तो 10% वो हम लोग नहीं कर सकते, वो प्रोफेशनल से कर सकते हैं. So I'll leave it there. I'll also leave a link for this in the description. I hope you guys enjoyed watching this video. Please do like and subscribe to the channel and comment if there's anything that you want me to do or anything that can be improved. So with that, take care guys, stay safe.